नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन एआरडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके और 146 करोड़ भारतवासियों के लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी के दिन बुधवार को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज मोदी सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को भारत और पाकिस्तान के साथ अन्य पड़ोसी देशों के साथ होने वाले युद्ध की अवधि को लेकर एक बड़ी बात कही। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि भारतीय सेना सरकार के साथ जनता को अप्रत्याशित भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए लंबी अवधि वाले युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने सरकार जनता के साथ देश की सेना सशस्त्र बलों को अल्पकालिक संघर्षों को लेकर 5 साल तक के युद्ध सहित सभी प्रकार की सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार रहने की बात कही। दोस्तों, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश के महू सैन्य छावनी के आर्मी वॉर कॉलेज में 3 सेनाओं की संयुक्त गोष्ठी रण संवाद 2025 के दूसरे और अंतिम दिन पूर्ण सत्र को संबोधित करने पहुंचे। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश पहुंचे राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत चीन हो, पाकिस्तान हो या नेपाल, किसी की जमीन हड़पना नहीं चाहता, लेकिन भारत मां पर किए जा रहे अवैध कब्जे अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। दोस्तों, आपको बता दें, रक्षा मंत्री ने ये बात प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी सहित भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति में कही और ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं की सराहना की और कहा कि अभियान भारत के स्वदेशी मंचों, उपकरणों और हथियार प्रणालियों की सफलता का एक बेहतरीन उदाहरण बना। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने कहा कि अमेरिका से हुए मनमुटाव के बीच युद्ध की आहट आ रही है। सभी सशस्त्र बलों को 5 साल से ज्यादा दिन तक चलने वाले युद्ध की तैयारी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, राजनाथ सिंह का कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरह से पाक के साथ चीन, अमेरिका, तुर्की को धूल चटाई और इंडिया की नई अद्भुत तकनीक संचालित कर युद्ध का अद्भुत प्रदर्शन किया, पर अब समय आ चुका है कला को लंबे समय में बदलने की महारत हासिल की जाए। दोस्तों, भारत के द्वारा आज युद्ध कला पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव की थीम पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जल, थल, वायुसेना के अधिकारियों का हौसला वर्धन कर कहा गया कि मई में तो पाक को छठी का दूध याद दिला दिया है, पर अब उससे बड़ी कठिन घड़ी आ सकती है। लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहें। It is the unbreakable foundation of our national security. Friends, on the occasion of Independence Day, all of you must have seen and heard when the Prime Minister Shri Narendra Modi announced the Sudarshan Chakra mission from the ramparts of the Red Fort. The Sudarshan Chakra mission is our resolve for India's self-defense, under which, in the coming years, all important places in the country will be covered with a shield of modern and indigenously developed technology. I am pleased that we are progressing rapidly in this direction. DRDO has recently successfully completed the first test of the integrated air defense weapon system. In addition, DRDO in the recent past has also successfully tested a high-powered directed energy weapon. I think these successes are not just of DRDO or the armed forces, but of the entire nation. Friends, during Operation Sindoor, we also saw better coordination among the 3 armed forces and their jointness. I believe that the jointness and integration of our forces played a major important role in the success of the Operation Sindoor. Therefore, I think we should also move forward in strengthening joint strategic communication. Friends, given how technologies are changing, accordingly, we need to accommodate the patterns of training of our forces. I was very happy to learn that the Army Training Command, RTRAC, has taken a policy decision to provide drone technology-related training to all Jawans of our Army by 2027. This will undoubtedly prove to be a game-changer step in this technological era. Friends, when I talk about changing technology and the changing world, it becomes very necessary that we also adapt our forces according to the changing world. For this, I have seen told that our army has taken the initiative for the formation of the Rudra Brigade.
Shaktivan Regiment, Divyast Battery, Drone Platoon, and the Bhairav Battalion. This is a matter of the great happiness because all these things have undoubtedly become very necessary keeping the future in mind. Friends, I would also like to say a few things about our Navy's technological progress. During Operation Sindoor, the way our Navy maintained strategic positions which limited the enemy's movement completely in the Arabian Sea. Our Navy's presence in the Indian Ocean is keeping our maritime borders completely secure. Our government is also working with full readiness to make the Navy even stronger and more robust. Just yesterday, I witnessed the commissioning INS Himagiri and INS Udaygiri in our Navy. According to the changing world and the changing technology, such numerous platforms and infrastructure are not only being included in the Navy, but are also strengthening it. Similarly, the Indian Air Force is also continuously strengthening itself by inducting everything from long-range missiles to next-generation beyond visual-range weapons. The counter-UAS grid is being further strengthened in view of the increasing use of drones, and besides, whether it's procurement of the policy-related changes, we are always moving forward in the direction of strengthening our forces. Friends, in today's era, wars have become so sudden and unpredictable that it is very difficult to predict when any war will end and how long it will last. So we must be prepared for every situation. We must be prepared for this so that our surge capacity is sufficient. That is, if any war stretches from 2 months, 4 months, a year, 2 years, even 5 years, then we should be fully prepared for it. That is why we need to streamline our defense industry. Friends, in today's era, any conflict affects the entire country and every citizen can come under its purview. A country's economic system, industrial structure, technological capabilities, education system, all these have now become major components of security. Therefore, the scope of defense preparedness cannot be limited to the armed forces alone. In such a situation, the importance of communication becomes even greater. Through dialogue, we not only share experiences and information, but also understand each other's capabilities, challenges, and needs. And this understanding leads us to those strategies which are necessary for success in multi-dimensional warfare. Friends, I want to emphasize that in today's time, the responsibility of being prepared is not only for the soldiers. The whole country and every citizen will have to be alert and capable at their own level. National security is no longer just a matter of armies, but has become an issue of a whole-of-nation approach. In this, the active role of industry, academia, media, technical institutes, and the civil society is necessary. Friends, the country's defense is not only handled by soldiers at the border, but also by the scientists who develop new technologies, the industrialists who produce weapon systems, and the teachers who prepare the next generation for warfare. Friends, when we look ahead, we should remember that the challenges before India are formidable, but our resolve and courage are even bigger. The world respects us not just for strength, but for our dedication to truth, peace, and justice. We do not want anyone's land, but we are ready to go to any extent to protect our land. We must take this country forward with our unity, our clear intentions, and the full commitment. With this confidence, we
we will confidently march toward 2047 and take India to new heights. Friends, in the end, I would like to say that today's Rana Samvad is not just an exchange of views, but an opportunity to understand the various dimensions of the security, policy making, and understanding different facets of the three services. The discussions here will give us an opportunity to think about how we can make India more empowered, secure, and self-reliant. I hope that your thoughts, your suggestions, and perspectives will be helpful in making the nation's defense policy more effective in the times to come. Let me conclude my address by wishing you all the very best for this meaningful dialogue. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. कहा गया है कि भारत पाक से पीओके लेने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए जाने से काफी पहले ये रणनीति बना ली गई थी। अब समय आ चुका है जिसके लिए सभी को तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह ताजा अपडेट्स लेकर हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।